PS Unit 6, Government Economic Policies. So government can influence conditions in a country by making variety of policies. So इसका starting paragraph क्या होगा? Government can influence economic conditions in a country by making various policies. So कौन-कौन से policies है? Fiscal policy. So first policy we'll talk about is fiscal policies. So fiscal policies में basically we are talking about government का revenue and government का spending. कितना कमाया और कितना spend किया. That is fiscal policy. So it is a government policy which adjusts. It is a government policy. Government का जी बड़ा लिखना चाहिए. It is a government policy which adjusts government spending and taxation. Government spending कितना खर्चा कर रही है and government revenue जो मेजरली 70% टैक्सेशन से आता है and government revenue which majorly comes from taxation. So गवर्नमेंट एम क्या करती है? बैलेंस बजट पे जितना कमाया उतना स्पेंडिंग, बट रियल लाइफ में वो कभी होता नहीं. सो गवर्नमेंट एम्स फॉर अ बैलेंस बजट. सो यदि गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है तो क्या होगा वो देखना है. इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यदि गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करे एंड टैक्सेस रिड्यूस करते तो क्या होगा? इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग and reducing taxes. यदि गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी और टैक्सेस को कम करेगी, will encourage more production. जो पहले पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास आ रहा था, अब उन्होंने टैक्सेशन कम किया है, तो वही पैसा हमारे पास रह जाएगा. तो उस पैसे से लोग फैक्ट्रीज लगाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कंट्री का आउटपुट ज्यादा होगा. सो इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रिड्यूसिंग टैक्सेस विल encourage more production, increasing employment. प्रोडक्शन है, फैक्ट्री में लोग तो चाहिए. मोर प्रोडक्शन मतलब मोर एम्प्लॉयमेंट एंड
GDP growth. So increasing government spending and reducing taxes will encourage more production, increase in employment, and GDP growth. मैम अगर ये गवर्नमेंट का पॉलिसी ले रहा है तो फिर ऐसे तो अलग से एम्प्लॉयमेंट का भी पॉलिसी होगा ना। फिस्कल पॉलिसी, जहां भी फिस्कल पॉलिसी वर्ड आता है ना, फिस्कल इज रिलेटेड टू, फिस्कल का मतलब ये है इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो हाँ मैं हाँ ये मैम, कहती लेकिन फिर हूँ ऐसा कि अलग से कैसा एम्प्लॉयमेंट पे भी आएगा ना तो पॉलिसी मैं बोल रही हूँ कि कि क्या फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट नहीं आया, आया ना, बिकॉज इट इज रिलेटेड, इफ मतलब ये एम्प्लॉयमेंट उसका एक इफेक्ट हो गया कि यदि गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस नहीं ले रही है, मतलब टैक्सेस में रिडक्शन कर रही है, सो पीपल विल सेव मनी, they don't have to pay it to the government, they have it for themselves. Now that they will invest in production, production will increase, output of the country will increase, GDP will increase, people will get employment, their standard of living will increase. So somehow मैम interrelated only. हाँ, बट ये रेट पे तो गवर्नमेंट ने किसी से टैक्स ही नहीं लेना चाहिए, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। no, there are very poor people also in economies. Okay, so if government is not taking tax only, how will they finance अपना जो भी बोलेंगे on infrastructure, on healthcare facilities, on expenses. people who are really poor and they need it. So point ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल टैक्स मत लो या सारा टैक्स ले लो, ऐसा नहीं. Somewhere there should be a Mid-mid. balance. So tax the rich, not the poor, should be the case. बट तो वो रिच तो पुअर देखने का ये दिखाएंगे ना। So that is what our government also does. No, up to a certain limit there is no tax. यदि 5-6 लाख रुपए कमा रहे हो, 5 lakhs कमा रहे हो, there is no tax, because उतना ही कमा रहे हो, so better you keep it for your family only, उतने में तुम्हारा family. After a certain limit government applies tax. Okay, so what will happen if government is taking more as taxes? That will discourage production and increase unemployment and GDP will fall. तो तुम सीधा भी लिखना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी गिरेगा ना। तो जस्ट उसको उल्टा लिखो ना कि इफ गवर्नमेंट इज टेकिंग मोर टैक्सेस तो क्या होगा? डिस्करेज स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल्स, unemployment will rise, GDP will fall. That is what you have to mention. So now talking about the second policy, which is monetary policy. आप मोर टैक्स के पॉइंट्स रिपीट कर सकते हो? Just write the opposite. That is, if government is taking more taxes, then production will fall, unemployment will rise, GDP जो है, GDP will fall, standard of living. स्टैंडर्ड ये ऑफ सब लिविंग कौन विल सा आल्सो पॉइंट्स फॉल। है? इसी के ये नीचे, कौन सा if point? you want to write it minus में, just the opposite of this you can mention here. Okay, now I am going to the next policy, children. प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड GDP. ओके। So government economic policies में सबसे पहले हमने फिस्कल का स्पेलिंग करेक्ट करना. सबसे पहले हमने बोला FISCL ना? FISCAL, fiscal policy. Second one is monetary policy. Anybody who can tell me what is the keyword for monetary policy? If you are an economics मनी student, पॉलिसी, Tax, interest rate, sorry, interest rate, interest rate, interest rate, इंटरेस्ट है, अबे money interest नहीं. rate, मनी interest है rate. ना, मॉनेटरी मनी।
और एक मिनट, इकोनॉमिक स्टूडेंट जिष्णु ने करेक्ट आंसर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी का कीवर्ड है इंटरेस्ट रेट। मैम ये सब आरबीआई कंट्रोल करता है ना इंडिया के लिए। हाँ, सो मॉनेटरी पॉलिसी, it is a government policy that adjusts interest rate and foreign exchange rate. It is a government policy that adjusts interest rate, कीवर्ड है यहाँ पे, that adjusts interest rate to influence the demand and supply one. मैम एक जनरल डाउट है। हाँ, डाउट पूछो। It is a government policy that adjusts interest rates to influence demand and supply of money in and